हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ट्रेंड। आई एम डॉक्टर जी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का बुलिश मार्केट ख़त्म हो गया और बियर मार्केट स्टार्ट हो गई है या नहीं, और ब्लो ऑफ टाइम आ गया है, ऑल दोज थिंग्स। बट बिफोर आई डिग इनटू दिस वीडियो, आई विल शेयर विद यू 7 डिफरेंट चार्ट्स which will show what happened in the past with the Bitcoin. So basically it says history doesn't repeat itself, but it does rhyme. So let's dig in. So before we go, just quickly एक Bitcoin के chart पे देख लेते हैं. So a lot of drawing I was doing actually on this Bitcoin. So it was going very nice, two big cups and handles it made, broke out, went up to the level of 69, और 69 के बाद इसने अपनी correction ली, और correction अगर आप basically calculate करें तो it almost took the correction of 14.6%. सो दीज करेक्शंस जो ऐसी साइकिल्स होती हैं ख़ासतौर पे क्रिप्टो में, इट्स हेल्दी, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. 20-30% करेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. सो मूविंग ऑन, volatility is not your enemy. Founders of 1.9 billion hedge fund on Bitcoin. So volatility actually solidify the price. ये फ्लोर सेट करता है नेक्स्ट बियर मार्केट के लिए. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इट्स शोइंग अ वेरी गुड सपोर्ट अराउंड दिस. ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है अराउंड द 59, 60, 61 के एरिया में, ये बड़ी अच्छी यहाँ पे अपनी सपोर्ट बना रहा है डेली चार्ट पे. सो इट्स अ गुड हेल्दी साइन इन द लॉन्ग टर्म टू कंट्रोल द बियर मार्केट डिप्स व्हेन द ब्लो ऑफ विल कम. So volatility is not your enemy, it is your friend, because it gives you opportunities to buy again the dips. That's why यही कहते हैं कि USDT आप अपने पोर्टफोलियो में 20-30% हमेशा रखा करें, ताकि जब भी ऐसे डिप्स आएँ you should take the opportunity to rebuy them again. Okay, moving on to the charts which I want to share is this. The first one is Bitcoin logarithm growth curve. So if you see, ये growth curve है जो एक पैटर्न आपको दिखा रहा है कि जिसका टॉप अप ये है और टॉप अप इसका यहाँ पर हुआ था और उसके बाद बियर मार्केट आपकी स्टार्ट हुई. This was back in 2017, this was back in 2013. तो अगर आप करंटली इसकी देखें तो करंटली यहाँ पे नीचे भी देखें तो ये टॉप पे आ रहे से यहाँ का टच कर रहा था. यहाँ पे अभी करंट साइकिल पे इट्स नॉट इवन क्लोज नियर बाय, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि अभी बुल मार्केट ख़त्म नहीं हुई. सो इफ़ यू मूव ऑन कि यहाँ से ये क्लिक करता है और ऊपर जाता है, तो आप अगर इसकी प्राइस प्रेडिक्शन देखें तो ऑन समवेयर इन फेब द प्रेडिक्शन इज़ 155,000 ऑफ बिटकॉइन, और उसके बाद शायद ब्लो ऑफ टाइम आए. बट टिल नाउ वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द बियर मार्केट. सो अगर आप इसको स्केल में भी देखें, यहाँ पे आपका ब्लो ऑफ आया, यहाँ पे ब्लो ऑफ आया, वी आर नॉट इवन क्लोज टू द ब्लो ऑफ एरिया. सो आई थिंक दिस विल गिव यू गुड इंसाइट कि अभी करंट मार्केट में हम किस स्टेटस में, बिकॉज अपर लाइन इज शोइंग द ब्लो ऑफ एरिया. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट चार्ट. ये जो चार्ट है आपका, इसमें ये दिखा रहे हैं कि अभी जो अगर आप इन्हें जूम आउट इसमें देखें तो RSI इज़ शोइंग अ बुलिश पैटर्न, और इसमें आपका जो वाइडनिंग असेंडिंग वेज बन रहा है विच इज़ अगेन अ वेरी बुलिश साइन. यहाँ पे आप ये दो लाइंस इसकी देख रहे हैं, इट्स अ वाइडनिंग असेंडिंग वेज. सो यहाँ से रिट्रेस करता है एंड इट ऑल द वे सेट टू गो टू द 73,000. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट. नेक्स्ट चार्ट में प्रीवियस ऑल टाइम हाई से पहले आपकी ऐसी डाइवर्जेंस बनी थी, यहाँ पे वेज बना था, एंड इट सेम मेकिंग अ सेम डाइवर्जेंस वेज शेप यहाँ पे बना रहा है, एंड इट इज़ अ गुड साइन इन द लॉन्ग टर्म फॉर द बिटकॉइन. Okay, this is very interesting, in which if you see the comparison of gold and Bitcoin, because gold was considered as the solid investment or the for the long term, और अब Bitcoin is a digital investment. तो अगर आप गोल्ड का ये येलो लाइन है, इसके चार्ट देखें, it was never ever in the same हाइक प्राइस. इसमें हिकअप्स आए थे, ये नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर आया, नीचे आया, फिर इट वेंट फ्रॉम ब्लो ऑफ पॉइंट यहाँ पर गया, और उसके बाद इट प्रोजेक्टेड अपवर्ड. एंड द सेम लाइक बिटकॉइन का अगर आप चार्ट भी इसके साथ कंपैरिजन करें तो इट्स फॉलोइंग द सेम पैटर्न इन अ जूम आउट वे. और अगर आप मार्केट की वैल्यू की भी बात करें तो मार्केट वैल्यू भी इज़ मूविंग अलॉन्ग द सेम ट्रेंड लाइन. सो इन अ लॉन्ग टर्म
Bitcoin is very, very bullish longer way. So in this chart, I'm doing a comparison between three bull markets, 2013, 2017, and now predicted for the 2021. So अगर आप 2000, I will not go into the much of the details. So 2013 or 17 का अगर आप देखें तो we were here between 4 to 6 region at this point. और ये comparatively, which I said before, the history rhymes itself. अभी हम इसी point पे हैं और इस point के बाद अभी 7 और उसके बाद 8, 9, 10, 11. There is a long way go ahead, my friends. Still, we are just in the beginning or in the middle of the bull market. Blow of time अभी नहीं आया. So again, the mid cycle आपको ये एक अच्छा comparison दे सकता है देखने के लिए. Now again, another comparison between the three cycles, 2013, 17, and 21. In 13 on the fib retracement and the angles, if you see, तो अभी हम इसके एंगल पे यहाँ पर हैं, which is around 60, and we are all good to go above 70,000 in this cycle still even. So if you zoom out from here, तो आप भी देख रहे हैं कि ये it's showing 200,000 of Bitcoin, and even on the Satoshi RSI, you can see we are not even close to the blow of time. Moving on the last chart. Again, it's showing a comparison between 2017 and 21 cycle, in which अगर आप इस September 22nd का यहाँ पे देखें, same pattern it's following. Again, November 12, it went down. People thought it's again into a bear market, not went again up from there. So again, 17th November, almost in the same time, history rhymes itself. और उसके बाद RSI divergence में भी it's showing a same ditto pattern what is showing here. और उसके बाद यहाँ से आप देखें कि कितना ऊपर गया. It went from the level of 8,000 to 18,000. So now we are at 60, and you can imagine where it is predicting about around 150 to 200,000 of Bitcoin. Last but not the least, again the cycle which is showing comparison between the three cycles, 13, 17, 21. You can see the levels, and in the 2017, if you're following the same pattern, we are all set to go around 200,000 to 300,000 of the Bitcoin price. So having said that, and if you haven't followed on my Twitter, you can follow on the Twitter with the name of Dr. Trend 123. All these cycles and the charts I share there. And yes, for the time being, there is a correction. For me, this correction is very healthy. It's giving you opportunity to buy the dips. So we will learn from the market. The message from this market is we should keep USDT. We should ready for the dips, because जितने भी मैंने आपको cycles दिखाई हैं, patterns दिखाई हैं, nothing is in the straight line. They go up, they come down. They go up, they come down. And the same thing happening here. But from here we will go up, again we will come down. So again एक और जो prediction आ रही है कि double bottom up हो गया इसका, which I don't see right now, because एक आपका bottom up, this one, and the second bottom up bottom, ये जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा, इस वाले एरिया को, it will not considered as the double bottom pattern. So double bottom pattern के लिए it has to break the level of 58, और अगर ये double bottom break करता है, then yes, we can see Bitcoin dipping down to this area, which is showing the strong support of around 52-53,000. So अगर यहाँ से ये break करता है 58 का, yes, we can see it's dipping down here. But what I am seeing is maybe it will retest here from there, and it will bounce back. If it not bounce back, then it will come down here. But again, if there is a dip, buy the dip. Volatility is your friend, it's not your enemy. So in the long term, Bitcoin is still looking very, very bullish. We are all set to cross minimum of 100,000 BTC. Maybe in the good odd days, 150,000 plus. In a very good days, maybe 200,000. So I hope you like this video and be optimistic about the crypto in the long term. We are still bullish. We are not entered in the bear market. Leave the thumb mark plus if you like the video,
and on the description I have a WhatsApp link. You can join that link on the social media. You can follow me on all the social media. Till the next video, take care of yourself. Love, peace and care.